Hello aspirants and welcome to EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 1st of March 2023. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. So the first article for the day is about the National Science Day of the current year. So through this article, we'll be learning about the purpose, why you observe this day, about the theme of this day. Alright, so ये जो day है, तो we have been observing this day since 1986. ठीक है, a very important day for India because इस day में ना यहाँ पे हम observe करते हैं February 20, that is कल का दिन हम observe करते हैं National Science Day to commemorate the announcement of the discovery of the Raman effect. So this is the purpose why we celebrate this day. It is not about birth or death of C.V. Raman, but it is about the discovery of the Raman effect, which we believe in the field of science and technology for India was quite a milestone achievement. ठीक है, now याद रखिएगा this day is not 11th of May because 11th of May को हम observe करते हैं National Tech Day or the National Technology Day, which is basically to commemorate the successful testing of the nuclear bombs in Pokhran on 11th of May 1998. So 1999 से हम observe करते हैं National Technology Day, but this is about the National Science Day. ठीक है, तो दोनों का purpose अलग है, दोनों का days अलग है, तो I do not get confused between these 2 days. So it can be important for our prelims, also for mains it can be important from our GS paper 3. Science and technology point of view has been taken from the Indian Express. So about the current context, as I was saying that 1986 we have been observing this day as the National Science Day, all right, to commemorate the announcement of the discovery of the Raman effect. All right, so अब जो ये day है, so this year's edition is being celebrated under the theme of Global Science for Global Well-being. ठीक है, so Global Science for Global Well-being is the theme, which is very important. अब यहाँ पे हम global के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं because you know that this year we have got the presidency of the G20. We'll also be conducting like we have been conducting a number of meetings of G20 and also the annual conference भी होगा इंडिया में. So this is the reason why because of the presidency of the G20 in the current year, we are speaking about global science for global well-being. All right. Now, if we talk about the Raman effect, okay, so you should understand the physicist C.V. Raman won the Nobel Prize for this purpose only. Okay, तो उन्होंने Nobel Prize जीता था in 1930 for his discovery of the Raman effect. अब ये जो Raman effect है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. It refers to the inelastic scattering of light by matter. ठीक है, तो matter में जब भी light गिरता है तो उससे क्या हो जाता है? It gets scattered, resulting in a shift in the frequency of the scattered light. In simpler words, अगर हम बात करेंगे, it is a change of the wavelength of light that occurs when a light beam is deflected by molecules. ठीक है, तो नॉर्मली आप जब देखोगे ये जो मैटर है तो मैटर इसीलिए यहाँ पे स्कैटर कर पा रहा है बिकॉज इट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो द मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग द लाइट बीम एंड ऑल्सो कॉजिंग अ शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट. द रमन इफेक्ट फ्रॉम द बेसिस फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हिच इज यूज्ड बाय केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल्स. राइट, सो बेसिकली आप कह सकते हो कि रमन इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आप देखोगे इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप कह सकते हो कि the Raman effect plays a very important role, right? So because as I told you in 1930 में it was C.V. Raman who won the Nobel Prize, all right, for his contribution. But यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा about the Nobel Prize which have been won by Indians, all right. तो देखिए यहाँ पे अगर आप साइंस के बारे में बात करेंगे about the other Indian Nobel laureates in the field of science. देखिए तो साइंस में you should know 1968 में it was हरगोविंद खुराना, 1983 में it was सुब्रमण्यम चंद्रशेखर and 2009 में it was वेंकटरमन रामकृष्ण. ठीक है, दिस फील्ड्स आर इंपॉर्टेंट, कभी आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखिए इट्स नॉट दैट एवरी पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम जब बात करते हैं नोबेल प्राइज बाय द इंडियन, दिस एक्चुअली मींस दैट नोबेल प्राइज हु बिलोंग्स टू इंडियन ओरिजिन एज वेल. ठीक है, बिकॉज सम पीपल यू वुड फाइंड दैट इज यहाँ पे जो 9 पर्सन्स है हु हैव वॉन द नोबेल प्राइजेस, तो यहाँ पे आई थिंक 4 ऑफ देम वेर एक्चुअली नॉट इंडियन सिटीजन बट दे वर ऑफ इंडियन यू कैन से ओरिजिन, इंडियन बाय बर्थ. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल देम लाइक वी से दैट दे आर इंडियन ओनली. ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द लिस्ट ऑफ द पर्सन्स हु हैव एवर द like award who have been awarded by the Nobel Prize, all right, and from the Indian perspective. So you can say यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो first है, all right, the first Nobel laureate from India was actually it was Rabindranath Tagore. ठीक है, Rabindranath Tagore, and then you will find and basically was awarded for literature, all right, and then you can say C.V. Raman, then हरगोविंद खुराना जो मैंने बताया था about medicine के बारे में, then Mother Teresa for her contributions for peace, all right. So basically आप देख सकते हो, these are the list of the Nobel laureates from India. So कभी भी आपको प्रीलिम्स में आपको ये सारा क्वेश्चन you may be asked, so make sure कि you know these things, right?
उसके बाद फिर टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन इन द फील्ड ऑफ साइंस के बारे में, बिकॉज दिस वाज वन एस्पेक्ट सीवी रमन का जो रमन इफेक्ट है. एंड अदर देन दैट वी कैन आल्सो टॉक इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ जीरो डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री. तो ये सारा जो फील्ड है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे इंडियंस हैव प्लेड अ वेरी मेजर रोल. एंड यहाँ पे हम बात कर सकते हैं आर्यभट्ट के बारे में, एंड ऑल्सो अबाउट ब्रह्मगुप्त के बारे में, हु हैज प्रोवाइडेड द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एंड रामानुजन के बारे में, ठीक है, हु वाज द ग्रेट मैथमेटिशियन. सो नाउ दे हैव लाइक मेड पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है आर्यभट्ट. आर्यभट्ट जो नेम इट इज क्वाइट कॉमन फॉर मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एज वेल. सो एशियन इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इंक्लूडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द अर्थ सर्कमफरेंस ऑल्सो. ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड एशियन टाइम में ही लाइक ही टुक एन इनिशिएटिव टू फाइंड to determine the circumference of the earth, the discovery of the lunar nodes and the development of the heliocentric model of the solar system. Right, so this is the achievements of Indians in the field of astronomy. And also medicine के respect में आप यहाँ पे बात कर सकते हो योगा के बारे में, about you can talk about health perspectives, we can talk about yoga, and medicine we can talk about Ayurveda. ठीक है, so Ayurveda, the traditional system of medicine in India. Now you should know that Ayurveda is a system which has been like formulated in India, but you should understand that this is currently applicable in the whole of the world. Okay, so the traditional system of medicine in India is one of the oldest medical systems in the world. Ancient Indian texts such as the Charak Samhita and the Susrata Samhita, now they provide detailed description of various medical conditions and the treatment as well. All right. And finally, if we talk about the contribution in the technological advancement, so India has a long history of technological innovation, including the development of metallurgy, shipbuilding, and textile production. ठीक है, तो you'll understand कि shipbuilding, या मान लीजिए कि यहाँ पे if we talk about ancient civilizations के बारे में, तो you'll understand कि यहाँ पे if we talk about sites like the Mohenjo-daro, like Harappa site, तो you must have known the history कि यहाँ पे जो ये sites है, there were urban centers. ठीक है, urban centers में क्या रहता है, यहाँ पे जो drainage pattern रहता है वो काफी plan रहता है, housing patterns are planned. So this particular advancement we have witnessed it like quite in the long time only. Take a long time in the past. So the ancient city of Mohenjo-daro, which existed in the Indus Valley over 4,500 years ago, had sophisticated sewage and drainage system. So these are nothing but what? These are achievement in the field of you can say in the field of technology. This topic here, please practice question. Please answer in the comment section. The next article is about a very important discovery. Now this is a discovery of a 1300-year-old Buddhist stupa. ठीक है, तो स्तूप या स्टूपा हम कहते हैं इसे. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे. वी लर्न अबाउट द बुद्धिस्ट स्तूपा किस तरीके का होता है, एंड ऑल्सो अबाउट दिस पर्टिकुलर डिस्कवरी. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज ASI, हैज डिस्कवर्ड द 1300-year-old stupa राइट इन द मिडल ऑफ अ माइनिंग साइट इन ओडिशा's जजपुर. ठीक है, सो जजपुर डिस्ट्रिक्ट में फाइंड किया गया. ये कभी आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा, एट अ कॉन्डलाइट माइनिंग साइट. ऑलराइट, नाउ दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स एंड ऑल्सो फ्रॉम GS पेपर in the history point of view. It's been taken from the Indian Express. So recently the Archaeological Survey of India discovered this particular stupa in Odisha Jajpur district at the Kondalite mining site. तो you should know ये जो Kondalite है इसके बारे में जानेंगे आगे, but अभी के लिए बस ये जान लीजिए कि it is a metamorphic rock. ठीक है, so Kondalite stones were very widely used in the ancient temple complexes, and as such this has been discovered in this particular mining site. All right, so it is the place from where Kondalite stones were supplied for the beautification project around the 12th century Sri Jagannath temple in Puri. ठीक है, तो यही से derive किया गया था Kondalite, which is also applied in the Jagannath Puri temple. All right. उसके बाद फिर टॉक अबाउट द फाइंडिंग्स ऑफ द ASI, दैट इज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में. तो ये जो स्तूप है, द बुद्धिस्ट स्तूप, नाउ इट कुड बी 4.5 मीटर टॉल एंड इनिशियल असेसमेंट शोड इट मे बिलोंग टू द 7th or 8th century. अब ये जो स्तूप है, इट वाज फाउंड एट द Parabhandi, which is situated near Lalitgiri, a major Buddhist complex having a large number of stoops and monasteries. अब ये जो ललितगिरी है बुद्धिस्ट साइट इज बिलीव टू बी अ मोस्ट सेक्रेड अमंग द 3 साइट्स, दैट इज ललितगिरी, रत्नगिरी एंड उदयगिरी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 में से दिस पर्टिकुलर साइट में पाया गया है, एज एट अनअर्थड अ मैसिव स्तूप वेयर अ रेलिक ऑफ बुद्धा वाज डिस्कवर्ड इनसाइड अ स्टोन कैस्केट. राइट, so finally we talk about the Kondalite stones के बारे में. So they are a kind of metamorphic rocks. Metamorphic rock आपने शायद सुना होगा, which changes its form because of the because of the overlying pressure और temperature change की वजह से. ठीक है, जो change होकर जो बनता है उसी को metamorphic rock कहते हैं. ठीक है, so metamorphic rock that is found in the eastern Ghats region of India. तो eastern Ghats is a mountain range which are found discontinuous range है जो कि eastern coast के पैरेलल पाया जाता है. So ओडिशा में पाया गया है. So it is named after the Kondalite group of rocks, right, which is believed to be have formed around
around 1.6 billion years ago during the Proterozoic era. All right, so chondrite is primarily composed of feldspar, then quartz and mica, and has a distinct pinkish gray coloration. And this is the reason why it is often seen to be used in the ancient temples. All right, so it is commonly used as a decorative stone in construction and is particularly prized for its durability and resistance to weathering. ठीक है, अभी के टाइम में भी ये जो chondrite है अभी भी हम यूज करते हैं, but then again you will find that this is quite rare in current time because it is quite you can say quite expensive because of its durability and because of its shine as well. Right, so chondrite stones were widely used in ancient temple complexes. They were proposed to be used widely to maintain aesthetic values of some projects such as the Heritage Security Zone, Jagannath Vallabh Pilgrim Center, etc. So these are the places which actually जहाँ पे पाया जाता है. अब चलिए थोड़ा बात करते हैं about stupa के बारे में. So about the Buddhist stupas, so stupas were the burial mounds prevalent in India from the Vedic period. So अब यहाँ पे you should know that the stupa actually they have been like quite popular after the death of Buddha. Okay, so if you talk about the architecture, so this you can see is the picture. All right, so these are actually burial mounds है ये. All right, तो जहाँ पे बुद्धा का जो last remains है तो ये basically पाया जाता है in various places across India. Right, so architecture का अगर हम बात करेंगे तो स्तूप्स basically consist of a cylindrical drum. ठीक है, so this you can see the cylindrical drum with a circular अंडा. ठीक है, so यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो this hemispherical जो ये shape है, this is actually the अंडा. All right, so and a harmika and a chatra on the top. All right, so this you can see the harmika and यहाँ पे आपको दिख रहा है ये chatra. So अंडा क्या होता है? This is the hemispherical mound symbolic of the it's basically symbolic of the mound of dirt used to cover Buddha's remain. As I was saying कि ये बुद्धा का जो रिमेन्स है उसी को डेपिक्ट करता है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द अंडा. एंड हर्मिका के बारे में अगर हम बात करेंगे, इट इज स्क्वायर रेलिंग ऑन टॉप ऑफ द माउंट. तो यू कैन सी माउंट के ऊपर जो ये रेलिंग है इट इज द हर्मिका एंड उसके ऊपर आपको दिख रहा है छतरा. तो छतरा इज बेसिकली सेंट्रल पिलर सपोर्टिंग अ ट्रिपल अम्ब्रेला फॉर्म. ऑलराइट, सो इफ यू लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ स्तूपा, तो स्तूपा देखिए बहुत सारी जगह पे पाया जाता है अक्रॉस इंडिया. सो सांची स्तूपा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है. इज द मोस्ट फेमस ऑफ द अशोकन स्तूपा. ऑलराइट, सो दिस वाज बेसिकली बिल्ट और यू कैन से दिस इज constructed under the patronage of Ashoka. And about the Pipadava Stup in Uttar Pradesh is the oldest one. The stups built after the death of Buddha are Rajgriha, Vaishali, Kapilavastu, Alakappa, then Ramagrama, then Vedapira, Pava, Kushinagar and Pipalvira. Okay, so these are the places where the actual remains of Buddha are found in the form of stup. Now, इस टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मिशन शक्ति. ठीक है, तो मिशन शक्ति देखिए बहुत सारे मिशन एक्चुअली डेयर व्हिच रिप्रेजेंट मिशन शक्ति. तो कुछ आपको मिलेगा मिशन शक्ति इन द फॉर्म ऑफ एन एंटी सैटेलाइट प्रोजेक्ट है. ठीक है, उसके बाद यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द पोखरान 2 के बारे में जिसे ऑपरेशन शक्ति कहा जाता है. ठीक है, अब ये जो मिशन शक्ति है दिस इज बेसिकली गवर्नमेंट इनिशिएटिव. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव एक्चुअली ये दिस फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. सो द सुप्रीम कोर्ट हैज सोट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट अबाउट द मिशन शक्ति. तो मिशन शक्ति का जो भी प्रोविजन है उसके बारे में द सुप्रीम कोर्ट हैज सीक इंफॉर्मेशन. व्हाई? बिकॉज दिस इज बेसिकली अम्ब्रेला स्कीम व्हिच इज मेंट फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन. राइट, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे बिकॉज दिस स्कीम काफी मतलब आप कह सकते हो कि लास्ट ईयर जैसे में लाया गया था. राइट, नाउ द फैक्ट्स कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स, द थिंग्स कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस पेपर, जेएस पेपर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज पॉइंट ऑफ व्यू, been taken from the Hindu. So, about the Mission Shakti. So, Mission Shakti is a scheme of the Ministry of Women and Child Development. कभी आपको डायरेक्टली पूछ देगा कि which of the following ministries are responsible for conducting the Mission Shakti? There is the Ministry of Women and Child Development aimed at strengthening interventions for women safety, security and empowerment. तो यहाँ पे basically 3 components है. एक हो गया women safety, security and empowerment. Alright, so women empowerment के बारे में it seeks to realize the government's commitment for women-led development by addressing issues affecting women on a life cycle continuum basis and by making them equal partners in nation building through convergence and citizen ownership. So currently we talk a lot about growth, we talk a lot about development. So currently यहाँ पे ये जो scheme है, तो through the mission scheme or through this particular project, we are trying to seek the participation, we are trying to seek the involvement of women in the development process of India. Alright, तो यहाँ पे ये मिशन शक्ति जो है यहाँ पे 2 कंपोनेंट या 2 स्कीम है. इट इज 2 सब स्कीम, दैट इज संबाल एंड समर्थ्य. ठीक है, तो संबाल जो है इट इज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. ठीक है, एंड समर्थ्य जो इट इज अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. ठीक है, एज आई वाज सेइंग कि ये जो शक्ति है इट इज अबाउट सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट. तो जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है इट कम्स अंडर संबल एंड द एम्पावरमेंट इट कम्स अंडर समर्थ्य. राइट,
तो थोड़ा जान लेते हैं अबाउट दी संभाल और ये समर्थ्य कंपोनेंट के बारे में। तो ये जो संभाल है अबाउट दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पे कुछ अर्स्टवाइल जो कि पहले से ही था, तो वैसे स्कीम को इसके अंदर क्लब किया गया है। फॉर एग्जांपल वन स्टॉप सेंटर, देन वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नाउ दिस बेसिकली फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द संभाल कंपोनेंट। एंड ऑल्सो अ न्यू कंपोनेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज द नारी अदालत। अभी जो नारी अदालत है, इट इज मेंट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वुमेन ओनली, व्हिच बेसिकली इज अ वुमेन्स कलेक्टिव्स है, ठीक है, ग्रुप्स है, टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन and gender justice in society and within the families. All right, so this basically focuses on the justice for the women, and also about the samarthya component के बारे में, which is about the women enforcement के women empowerment के बारे में. So the components of samarthya sub scheme consist of all. तो यहाँ पे भी कुछ पुराने स्कीम डाले गए हैं, जैसे कि स्कीम्स ऑफ उज्ज्वल, ठीक है, उसके बाद द स्वाधार गृह। ऑलराइट, तो उज्ज्वल इज बेसिकली अबाउट द एलपीजी कनेक्शन के बारे में, राइट। उसके बाद स्वाधार गृह एंड ऑल्सो वर्किंग वुमेन हॉस्टल हैज बीन इंक्लूडेड इन मॉडिफिकेशन। ऑलराइट, सो इन एडिशन द एक्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ द नेशनल क्रेच scheme for the children of the working mothers and the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana under the umbrella ICDS have also been included in this particular samarthya, ठीक है। सो न्यू कंपोनेंट यहाँ पे भी डाला गया है, जिस तरीके से यहाँ पे नारी अदालत है, तो यहाँ पे न्यू कंपोनेंट ऑफ गैप फंडिंग फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हैज ऑल्सो बीन एडेड इन द सामर्थ्य स्कीम, ठीक है। सो इट इज नोन एज अ गैप फंडिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The next article is about the interactive meet on millet conservation. तो ये article जो is based on Arunachal Pradesh. The news says that staff and the progressive farmers of Arik Abik Lunom participate in an interactive meet on indigenous millets of India and their conservation. किस तरीके से promote किया जाएगा, इसे conserve किया जाएगा, which was conducted by the Department of Education in Science and Mathematics. All right, and NCERT, the government from the government of India. ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करें। Actually ये जो news है particularly अपने लिए इतना important नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, but you will understand कि जो मिलेट है ना, द मिलेट यू विल फाइंड दैट इस साल या फ्रॉम द पास्ट 1 or 2 years इट इज क्वाइट इन द न्यूज, ठीक है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट, टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, व्हाई मिलेट इज इंपॉर्टेंट, विल लुक एट द बेनिफिट्स ऑफ इट। सो इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड आल्सो फॉर मेंस, इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू एग्रीकल्चर रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू, विल टेक इट फ्रॉम द एको ऑफ अरुणाचल। नाउ बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से दैट करंट जो ईयर है ना, तो इस साल को द यूएन हैज ऑब्जर्व्ड, द यूएन हैज अनाउंस अंडर द लाइक प्रपोजल ऑफ इंडिया एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ठीक है। तो ये जो 2023 है, इट इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ इंडिया ओनली। So the FAO, that is the Food and Agriculture Organization, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटाली में है, of the United Nations has declared 2023 as the International Year of Millet. The current year जो है, it has been observed as the International Year of Millet. Now millets have special nutritive properties. All right, they are high in protein, then dietary fiber, micronutrients and antioxidant as well. ठीक है, तो special economic characteristics भी है. There is drought resistant and suitable for semi-arid region. Now you know that because of the climate change we are facing a menace of water crisis. ठीक है, अभी जो water crisis है, अब देखोगे बहुत सारे जगहों पे द वाटर जो ये ग्राउंड टेबल है, तो ग्राउंड टेबल का जो पानी है वो काफ़ी डिप्लीट हो गया, वो काफ़ी रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ना हम फोकस करते हैं अबाउट वेज ऑफ इरिगेशन, जहाँ पे पानी बहुत कम लगे, या हम फोकस करते हैं ऐसे क्रॉप में जहाँ पे जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली मिलेट जो है एक ऐसा क्रॉप है जहाँ पे जो वाटर जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम रहता है। एज यू कैन सी दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंट, देखिए वो ड्रॉट में भी वो ग्रो कर सकते हैं, प्लस सुटेबल फॉर सेमी एरिड रीजन्स एज वेल, ठीक है। तो मेजरली देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ मिलेट्स व्हिच आर ग्रोन इन इंडिया, एक हो गया मेजर और दूसरा हो गया माइनर। द मेजर इंपॉर्टेंट नाम डायरेक्टली याद कर लीजिए, सोरगम, पर्ल मिलेट एंड फिंगर मिलेट। ऑलराइट, तो दिस आर द सोरगम, पर्ल मिलेट एंड द फिंगर मिलेट आर बेसिकली द मेजर ones, while the minor millets include foxtail, little millet, kodo, then proso and the barnyard millet. Alright, so India's millet resolution is driven by growing awareness of the health and the environmental benefits of millet. So the thing is that in the case of, because हम देखिए यूजुअली हम डिपेंड करते हैं राइस के ऊपर, नॉर्थ इंडिया में जो स्टेपल फूड है वो रोटी वगैरह होता है, विच इज मोस्टली डेट फ्रॉम व्हीट, ठीक है। तो राइस एंड व्हीट के बाहर हम कभी भी स्टेपल फूड को इमेजिन नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रिवॉल्यूशन है इसीलिए लाया गया है ताकि लोगों का एक जागरूकता हो कि किस तरीके से मिलेट के भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, हाउ मिलेट कैन ऑल्सो बी प्रमोटेड एज अ स्टेपल फूड। ऑलराइट, सो बाय ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ एंड द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ मिलेट एज वेल एज efforts to revive the traditional agricultural practices and support small scale farmers. It is seen as a solution to the country's dual challenge of improving public health and promoting sustainable agriculture. एग्रीकल्चर में आप जैसे कि मैंने बताया कि वाटर लेवल को किस तरीके से यहाँ पे कम यूज करके हाउ वी कैन फोकस ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे मिलेट्स हेल्प करेगा। प्लस इतना सारे यहाँ पे बेनिफिट्स है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर, लाइक हाई इन प्रोटीन, डायटरी फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। नाउ दिस बेसिकली हेल्प द इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ एज वेल।
अब यहाँ पे अगर बात करेंगे मिलेट्स के बारे में, सो दिस वी कैन सी द मेजर वंस, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाजरा, तो बाजरा जो है ना ये मेजर है, दैट इज द पर्ल मिलेट, ठीक है। हमने बात किया था बट फिंगर मिलेट के बारे में, तो ये रागी है और ये आपका सोरगम है, ठीक है। तो दिस आर सम ऑफ द मेजर वंस। सो इट्स अ कलेक्टिव टर्म रेफरिंग टू अ नंबर ऑफ स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस दैट आर कल्टिवेटेड एज ग्रेन क्रॉप्स, primarily on marginal lands in dried areas in temperate subtropical and tropical regions. So you can understand कि ये कितना suitable है। Normally आप देखोगे जो rice होता है ना, that is a tropical crop, जो wheat होता है it is a temperate crop, but you can look at this particular जो millet है, it can be grown in dry areas in temperate, subtropical and tropical, ठीक है। So you can look at the versatility of the particular millet. So some of the common millets available in India are ragi, that is finger millet, jowar, that is sorghum, ठीक है। तो sorghum is known as the jowar, or this you can see is the sorghum, and then sama, there is little millet, bajra and variga, all right। So the earliest evidence of these grains have been found in Indus Valley civilization and was one of the first plants to be domesticated for foods, ठीक है। राइस बहुत बाद में आता है। It is grown in about 131 countries and is a traditional food for around 60 crore people in Asia and Africa, and interestingly ये सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है in Asia and Africa only, and you should understand India जो है is the highest producer। India आप देखोगे वर्ल्ड के केस में 20% देता है कंट्रीब्यूशन, एंड और आप देखोगे एशिया के केस में इट कंट्रीब्यूट्स, इट अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द मिलेट प्रोडक्शन इन एशिया। तो फाइनली चलिए बात करते हैं अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट एज द न्यूट्री सीरियल्स के बारे में। तो यू शुड अंडरस्टैंड, देखिए ये जो मिलेट्स है ना, तो मिलेट्स का जो एडवांटेजेस है, नाउ दिस कैन ऑल्सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस पर्टिकुलर एडवांटेजेस, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इफ यू आर अ डाइट कॉन्शियस पर्सन, ठीक है, इफ यू आर क्वाइट लाइक फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, डेफिनेटली यू कैन कंसिडर हैविंग मिलेट एज योर डाइट, राइट। सो पहला बताया जाता है अबाउट क्लाइमेट रेजिलियंट स्टेपल फूड क्रॉप के बारे में, बिकॉज दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड दे कैन ऑल्सो ग्रो इन पोर सोइल कंडीशंस। दिस मेक्स देम द suitable food crop for the areas with unpredictable weather patterns and water scarcity. They are also rich in nutrients. They are a good source of protein, fiber, vitamins and the minerals. So the people, the students जो जिम जाते हैं तो वो भी इसे consider कर सकते हैं. They are also gluten free in nature because millets are naturally they are gluten free, so making them suitable for people with celiac diseases or gluten intolerance. They are also adaptable in nature because millets can be grown in a variety of soils and climates, making them a versatile crop opinion for the farmers. All right, the sustainability के बारे में, millets are often grown using traditional farming methods, which are more sustainable and environmental friendly than modern industrial farming practices. So these are the advantages which are a part of like cultivating or growing or consuming millets. So these were some of the questions that are asked in the previous video. Let's look at the answer. So the answer for this question is, अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अगर हम GST को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये PPC में पूछा गया था। सो इट विल नॉट ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट, ऑब्वियस सा बात है। इट विल ऑल्सो नॉट मेक एनी इंक्रीज इन द ग्रोथ इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड इट विल ऑल्सो नॉट एनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। तो दिस आर नॉट एक्चुअली एट रिलेवेंट थिंग्स, सो इट इज ओनली वन, ऑलराइट। सो इट विल ओनली रिप्लेस द मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल ऑथोरिटीज एंड विल जस्ट क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। So these are more questions that I asked in the previous video. Let's look at the answers. So the answers are, so about the 21st February, yes, it is declared as the International Mother's Language Day by the not UNESCO but UNICEF. So this is wrong. The second one is the correct answer. And about the Sangeet Natak Academy Ustad Bismillah Khan Diva Puraskar from Arunachal is Reddy Carlo Digbak. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining and we'll meet the next one. Bye bye and take care.